Amar Shamu Sonave. मैं president and founder of Global Man Women International, Global Model India Organization और Man of the Earth organization का president founder हूँ. और मैं पुणे से हूँ. आई एम एन इंडियन. और ये सेकेंड एडिशन हो रहा है अपने इंडिया में. और वी स्टार्टेड इन मुंबई. और यहाँ पे हमारे जो कंट्रीज आए, मलेशिया से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, अल्जीरिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए, यूएस से आए, ये इंडिया में आए ये टाइटल जीतने के लिए, जो कि ग्लोबल मैन वुमेन इंटरनेशनल है. जो टाइटल्स उसके अंडर जो टाइटल्स है वो है मिस्टर ग्लोबल इंटरनेशनल, मिस ग्लोबल इंटरनेशनल, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल, टीन प्री टीन किड्स ग्लोबल इंटरनेशनल. और इसका फिनाले जो होगा, ग्रैंड फिनाले, वो होगा सांगली सिटी में, जो कि सांगली फेस्टिवल्स में करते, गवर्नमेंट ऑफ सांगली करेंगे. और ये रिसोर्सेज इवेंट मैनेज बाय रिसोर्सेज इवेंट्स होगा, फर्स्ट टाइम, जहाँ पे 40,000 लाइव क्राउड होगा वहाँ पे. तो आई इनवाइट एवरीबडी, सब लोग आइए, देखिए, एंजॉय कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो एक ग्रैंड विनर बनेगा, ही और शी विल बी द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पूरे साल भर उनको एक मौका दिया जाएगा यहाँ पे हमारी मुंबई में, बॉलीवुड में, जो कि हमारा पूरा बॉलीवुड सेंट्रिक है. तो यहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, जैसे बिग बॉस हो गया, जहाँ पे मीडिया हम लोग का, जहाँ मराठी बिग बॉस हो गया, वहाँ पे हम लोग उनको मौका देंगे. लास्ट ईयर के मेरे जो विनर थे, जो फेस ऑफ मेरा ऑर्गेनाइजेशन थे, ग्लोबल मॉडल इंडिया, वो आज हमारे साथ है. रूबिन, जो कि श्रीलंकन है. इन्होंने काफी साल, इस साल में काफी काम करा है इंडिया में मेरे साथ, नॉट जस्ट इन इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, काफी जगह पे ये मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं. और ये ऑर्गेनाइजेशन उनका करता है, जो कि ग्लोबल मॉडल इंडिया है. एंड इस साल भी मेरा यही एक मोटो है कि एक मैं एक ऐसा फेस ढूंढूं जो कि इंडिया के साथ, उनके कंट्री के साथ तो करे करे, पर इंडिया का नाम भी आगे लेके जाए. सो अभी आप इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये रूबिन मोहम्मद फ्रॉम श्रीलंका, एंड शी इज माय विनर ऑफ मिस ग्लोबल इंटरनेशनल, आर वरुणी. तो आप पूछ सकते हैं इनसे. Namaste, Namaste India, Namaste everyone, every contestants who are coming here. I'm Ruben. Anyways, I'm just introducing myself. Yeah, actually, I had my life has changed after the pageant. Last year, I won. I won this title as Master Mr. Global International, and then sir ne mujhe diya to work with him as face of the brand. And after that, I went to Malaysia, Vietnam, Thailand. Thailand, I've been to 7, 8 times, and I've been to some so many big pageant. May I've been to jury board, and there was very turning point in my life. Like last 2025, been a successful year for me with this organization, Global Man and Woman International. So I really thank my sir, Mr. Amar Shamu Sonawani. He is the founder of our, this organization. And yeah, thank you so much. I am actually quite sad. So this is my farewell year. So I'm gonna, give my crown to a new winner. So I hope the new winner also is gonna work with our organization as I promote. I hope more than that. I wish that. Yeah, thank you. Actually, I need to give some advice for everyone. First, believe yourself. I believe myself. That's why I'm standing as the queen. Miss Global International Pageant for Amar Sahel. It's my life biggest turning point. Actually, I got achieved so many things in last in year my life, because now I started my modeling school and I became national director and do so many things after winning that pageant. Then I hope to everyone join that Miss Global International platform in the future. You can turn your life the biggest thing in the next your life. And special thanks Amar sir and Global Model India. Thank you everyone, and thank you Thank you. India. Thank you. Thank you. Yes, they are going to be acting like mentors also. It is not, it may be like their last reign, but it's not the end of it. It's a new beginning, like I would always say. It's new beginning for a new chapter in not just their lives, but for people who are going to participate in this contest. And make, like they said, this was the turning point in their lives. It changed their lives. So I would like to see more lives change. And that's why, this platform which I've created, which is Global Man Woman International and Man of the Earth, is
so that people can not just change their lives but be inspiration, be an aspiration for other people, other young minds as role models, and maybe change their lives and try to change others' lives for better. Thank you. Yes, yes. Actually, they are from not just from India. It's an international pageant, so obviously, we have people coming from other countries as well, like Algeria, Australia, USA, of course, Sri Lanka. We have Malaysia and India. So, being a Christmas festive year, it's like people are really with their families. But nonetheless, next year we're going to have separate pageants for each and every category. Like Miss will be separate, Mister will be separate, Mrs. will be separate. So I really, really urge everybody to support this young people, not just them, because it's support their dreams. This is what my message is for everybody out there. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to introduce this lovely contestants who've traveled all the way from around the globe. So, firstly, I would like to introduce you our first Mrs. contestant, all the way from Malaysia, Mrs. Angela June. Then we have Sherlyn, who's come all the way from Australia. And then from the boys, we have from Malaysia, Putra, and all the way from Sri Lanka, Pradeep. Please share your words about this big event that you are participating. Tell us about your excitement. I'm Angela June. I'm representing my beautiful country, Malaysia, as the Mrs. Global International. I would say I'm very honored to be here in Mumbai, India. Thank you very much to Mr. Amar for me being here. Thank you. Thank you. Yeah, I'm Charlene from Australia. I'm super excited to be here. Thank you for welcoming me in your country. I love the culture. I love experiencing all different types of cultures, and it's a big honor to be here. So thank you. Hi, I'm Pradeep from Sri Lanka. I'm so happy to be here to represent my nation as a Mr. Global International. I hope that it's going to be such a big show in my life. It's going to be change my life also. So thank you so much. Hi, my name is Putra Iman. I'm representing Malaysia for Mr. Global International, and I hope that we can create a lot of memories here to end this 2025. अभी हमारे साथ है टीम श्रीलंका. तो मेरे लेफ्ट में मिस्टर ग्लोबल इंटरनेशनल श्रीलंका अमील, जो कि विनर है मिस्टर श्रीलंका वर्ल्ड वाइड के 2025. उनके साथ है दीप्ति ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका, मिस श्रीलंका. मेरे राइट में है कबी नेशन फ्रॉम श्रीलंका, वो टीम कैटेगरी में. और मैथ्यू जो कि मैन ऑफ द अर्थ 2025 के कंटेस्टेंट है. Share your excitement about this event and what you say. Namaste India, I'm Kabination Sridev. I'm proudly representing my Sri Lanka country as a Mr. T Global International, and this is my first time in India, and I have met different brothers from different countries, and I'm excited to hear, and I believe that I'll bring the title for my country. My name is Matthew. I'm from Sri Lanka. This opportunity for this is my biggest show in this time. I love India. Thank you. So, I won. I'm Priti Pandara. So, I represent Sri Lanka Miss Global International this year. So, it's really excited to be here. And so, this is my first time to be in India. And I love the culture, so my friendly people. So, thank you for giving this opportunity. Thank you. And Hi everyone. I'm Amila Soita. I'm 22 years old and I'm still studying as a software engineer, and this is my first international pageant, and I'm really excited to see you all, and thank you for giving this chance. welcome. Thank you. नमस्ते. अभी मेरे साथ है ऑल द वे फ्रॉम यूएसए जून, जो कि अमेरिका से आए इतने दूर से. सो मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए. सो थैंक यू जून फॉर बीइंग हियर.
एंड मेरे लेफ्ट में है हबीब मिस्तारी जो कि अल्जीरिया को रिप्रेजेंट करने आए हैं, और मेरे राइट में इंडिया के हैं अपने नौजवान, एक तरफ है सूरज ऑल द वे फ्रॉम ओडिशा, और निनाद शिवलकर जो कि मुंबई से हैं। सभी को नमस्ते। मैं सूरज, मैन ऑफ द अर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और थैंक्स टू अमर सर जो काफ़ी वेट के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। थैंक यू। Well, it's a privilege. First of all, I'm representing India, thanks to Amar sir. And it's a journey from being local to global. So I'm representing India for Mr. Global International, the land of rich culture and heritage. And it's a blessing to be here. Thank you. Hello everyone, my name is Habib Saleh. I'm so proud to represent Algeria here in Mumbai with Mr. Global International. I'm so happy and thank you so much for Mr. Ammar. Thank you. Can you kind words, are you excited for this upcoming event? Absolutely. Namaste. Namaste. I am June Wu. I am from United States of America and absolutely thrilled to be here. My grandpa once said, if what you did yesterday still seems big to you today, then that must mean you have done nothing today. And everyone, I think we would all agree today we're doing something very special. Enjoy the show. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. के कंटेस्टेंट से एक तरफ है मयूरेश माने जो कि मुंबई से है, और आदर्श माझी ओडिशा से हैं। Namaskar, I'm Adarsh Maji from Odisha. I'm very happy to be here and I'm very grateful. I'm feeling blessed that I'm going to represent the United Diversity country, India. Thank you so much. नमस्ते, मेरा नाम मयूरेश है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे चांस मिल रहा है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट। और यहाँ पे सर ने जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा गया है जहाँ से इंडिया के कोने से तो लोग आ ही रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो एक्सपोजर हमें मिल रहा है, बहुत कम प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो हमें इस काइंड ऑफ एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर अमर सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, अभी मेरे साथ है इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव ऑल द वे फ्रॉम त्रिपुरा, पुष्पिता मुरासिंगा। So much namaste everyone. Thank you so much for coming today. I'm really excited and nervous as well, but yeah, I believe that we are going to have a great journey together. So I really want to thank to everyone whoever has came from across the countries. So I believe that we are going to have a great time together. And yeah, thank you so much. नमस्ते, मैं पुष्पिता मुराद सिंह, आपकी GMI मिस इंडिया 2024 और आपकी मिस ग्लोबल इंटरनेशनल इंडिया 2025। मैं बहुत ही खुश हूँ आज to share screen with Amar. He has inspired me so much through my whole journey. He never demotivated me. He has always motivated me every time. So I'm really grateful ki I'm so sorry. Yeah. So yeah, thank you so much. इसका एक तरफ है श्रीलंका की टीम और एक तरफ है इंडिया की टीम जो कि बहुत सुपर टैलेंटेड है। इनके साइज पे मत जाओ ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो खुद अभी इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। Hello everyone, I'm Hineda. I'm coming from Sri Lanka. First of all, I would like to thank my India. I'm very happy and proud of my posting with Team Global International, and thank you very much. And this is my proud moment. Thank you very much. That's all. Hi, I'm Madhi Allan. So I'm from Sri Lanka. So I actually did this year. So this opportunity myself, my thank myself. So thank you for India. So they're very supporting. I do will my best. Thank you. Hello everyone, I'm Deep Roy, GMI Little Miss India. Thank you, Amar sir, for believing in me and giving me this wonderful opportunity. Thank you. Namaste, I'm Subhasita from Odisha, India. I'm very excited for this, and I thank you so much for this.
हेलो नमस्ते। अभी मेरे साथ है अनुश्री जो कि उड़ीसा से आई है और ये एक बहुत बड़ा मॉडलिंग कॉन्टेस्ट होता है थाईलैंड में, आई एम मॉडल सर्च इंटरनेशनल 2025। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी 3 कैटेगरी में। Hello everyone, Namaste. I'm Anushri from India and from Odisha. So I will be representing India in an international pageant which will be held in Thailand very soon in January 2026, and I'm very excited and I hope I will win, and yeah, India. हिंदी में Thank कुछ you. थोड़ा। अच्छा, तो नमस्ते एवरीवन, मैं अनुश्री हूँ, उड़ीसा इंडिया से हूँ और मैं यहाँ मेरे नेशनल क्राउनिंग के लिए आई हूँ। और मैं अभी बहुत ही जल्द जनवरी में तो 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने थाईलैंड जा रही हूँ और आई होप मैं वहाँ जीत के आऊँ और हमारे इंडिया का नाम बहुत रोशन करके आऊँ। थैंक यू। So we have today from all the way from Sri Lanka, the national director of my pageant, Global Man Women International and Man of the Earth, Mr. Nirmal Bhandara, जो कि मिस यूनिवर्स श्रीलंका के भी नेशनल डायरेक्टर है और मिस कॉस्मोस श्रीलंका के भी नेशनल डायरेक्टर है। सो आई रियली वांट टू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर सपोर्टिंग मी, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका, मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं उनके कंटेस्टेंट्स को लेके। तो और वो भी क्रिसमस के टाइम पे, तो मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ। तो निर्मल, वुड यू वांट टू से समथिंग? Actually, I don't want to talk much more because it's really glad to work with my brother Amar, and because we love India, because we love the culture of India. We almost every Sri Lankan people love India, so it's really happy to be here, and I glad to work with more. Thank you. थैंक यू निर्मल। सिद्धेश यादव जो कि बहुत एक प्रख्यात इंटरनेशनल जूरी है और दांडिया रास में आपने इनको देखा होगा फाल्गुनी पाठक जी के साथ, जो कि जज करते हैं दांडिया रास वगैरह, और इंटरनेशनल पैजेंट बहुत इन्होंने जज करा है। एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम, मिस्टर सिद्धेश यादव। थैंक यू। Thank you so much for the invitation, Amar. As always, we know each other from many years. So thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. तर कसं मराठीचं बोलायचं आहे? मराठी